Hello and welcome to Kotak Securities YouTube channel. I'm Indu Chaudhary and this is Kotak Chatroom, a show where we talk about primary market IPOs and interact with management to get their opinion. In this special edition, we are going to be focusing on Mankind Pharma IPO, which is set to hit the street on April 25th. And to discuss details on the IPO, joining me, the top management of Mankind Pharma in Mr. Rajeev Juneja, Vice Chairman and Managing Director of Mankind Pharma Limited. Sir, welcome to the show and thank you so much for taking the time out. Thanks a lot for inviting me here, having a chat with you. Sure. Okay. So, I would like to start. Let me begin by understanding, first of all the details about the IPO, the issue size that you are looking at, the price band that you have set, and the objective of launching this IPO. This IPO is totally offer for sale because we were committed to give exit to our existing investors, which were there in the company from last number of years, 8 years to be very, very precise. Size of IPO is 4,325 crore rupees. It is 10%, in which 7.5% is going from our existing investor side, and 2.5% is coming from our side. Actually, this process was started to give exit to our existing investors, but in between they had a change of heart and they said they don't want to exit completely. And that's one reason we also added our uh, percentage to make it 10%. And price band is 1026 to 1080. That's the price band. Sure. Okay. So, I was reading your revenue mix is like really tilted towards the domestic market. Largely, you are currently receiving 97% of revenue from the domestic market. So, I wanted to understand: do you also have a focus which will shift out of the domestic market in the future, or do you want to keep it that way with more focus in the domestic market? Before I speak about that, I mean, let you understand the story of mankind that we have always been a very, very focused company. It's not only India focused, we have been जिस भी स्टेट में हम गए उस स्टेट के फोकस रहे हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन आई से कि ये 27 साल पुरानी कंपनी है तो एक्चुअली में ये इसकी एवरेज एज निकलेगी 21 ईयर से. ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ क्योंकि 27 साल हम पुराने हैं यूपी के अंदर, 26 साल पुराने होंगे पंजाब हरियाणा में, 25 साल पुराने होंगे मध्य प्रदेश राजस्थान में. दिस इज हाउ दिस कंपनी हैज इवॉल्व्ड. whichever state we launched, that state became world for us. Slowly and gradually we evolved. और एक बात समझने की है, जब भी आप इस तरह से फोकस करते हो, इस तरह से काम करते हैं, फोकस तो काम करते हैं, so whatever differentiation in the first year you have got are out, other people start copying it. तो आपको next state में या third state में या fourth year में every time you're supposed to evolve yourself. And why this philosophy was basically, followed by us, there's a reason for that. Because we saw in those days great opportunities in domestic market, especially in smaller towns. उस टाइम पर बड़ी कंपनीज बड़े शहरों से छोटे शहरों में आती थी. They had a very poor representation. We saw that as an opportunity because we had just 50 lakh rupees in our hand and we wanted to exploit that to the fullest. और जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो आपका दिमाग naturally ज़्यादा चलता है. So we were trying to find out some kind of a strategy which can really help us in making our mark in pharma industry. So instead of starting from top cities, we never followed anybody's path. हमने start किया जहाँ पर हमें लगा opportunities ज़्यादा हैं और वो हमें मिली छोटे शहरों के अंदर. And then now people say it was a wonderful strategy starting bottom up. हमें उस टाइम नहीं पता था ये bottom up है. हमें तो बस चाहिए था कि कहीं पर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, we can crack it. Just example I give you. We are from Meerut. We started the company from Meerut, UP. Delhi is only 70 kilometers from Meerut, but we launched Delhi in 2004. We launched Mumbai side 20 years back. We launched southern part of India 22 years back. The point is what?
thought was just very clear. We will go deepest. I will cover maximum market. We'll go to small towns. We'll try to cover every doctor possible. So today, if you look at mankind, mankind has got 80% penetration in the market. 80% doctors are being met by mankind's medical reps. The plus side क्या होती है उसके अंदर कि we are not depending upon few thousand doctors. कोई डॉक्टर्स हमें सपोर्ट करते होंगे 2,000 रुपए की, कोई करते होंगे 4,000 रुपए की, कोई करते होंगे 10,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए की. वी आर वेरी वेल स्प्रेड आउट. रिस्क नहीं होता. It really, I mean, give a very tough time to competitors to take our share because our dependence is on thousand lakhs of doctors. That's a plus side. तो हमारा कोई इरादा नहीं है बाहर जाने का. ओनली 3-4% सेल्स कम फ्रॉम यूएस और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड. क्योंकि सोच इस बात के ऊपर है, जब तक हमारे पास कोई पेटेंट प्रोडक्ट ना हो या कोई ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो बड़ा मुश्किल से बनता है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, डिफिकल्ट टू मेक, on the basis of which we can command respect, name, money from abroad. Otherwise, going with vanilla products will always be uh, suppressed by those guys in prices and profitability. We don't want. We're very happy. We see India growing very fast. And look at now, in the last couple of years, things are totally changed. Even smaller towns are thriving with growth. The prosperity is there. We see, I mean, our future belongs to India only. We are present in Bharat, we are present in India, we are present everywhere. We're happy that. बिल्कुल राजीव. सो जैसे आपने बताया कि आपका फ़ोकस आपने स्टार्ट ही छोटे शहरों के साथ किया था और आगे चलकर आपने अपने पूरे बिज़नेस को एक्सपैंड किया है, इनफैक्ट टियर 1, टियर 2 हर जगह पर. सो अगर आपके प्रोडक्ट्स कैटेगरी को देखें तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी और आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर चुके हैं ऑलरेडी. तो एनी प्लान्स टू ऐड सम मोर प्रोडक्ट्स इन योर पोर्टफोलियो, लाइक करेंटली आपकी जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में उनमें कई सारे प्रोडक्ट्स में हम ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं. सो इज देयर एनीथिंग लाइक यू लाइक टू ऐड ऑन योर कंज्यूमर सेगमेंट जहाँ पर आप कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं? ये तो एम्बिशन हमेशा रहती है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हम ऐड करते रहें. बट आज की डेट में क्या है कि इन लास्ट 4 years टाइम we have added more than 3,000 people. We have opened 18 new divisions, all skewed towards, bent towards chronic side. बिकॉज अगर आप एज ए होल हिंदुस्तान में चेक करें तो डिजीज पैटर्न बहुत तेज़ी से चेंज हो गया है या हो रहा है. किसी ज़माने में एक्यूट बहुत चलता था, गैस्ट्रो था, डायरिया था, मलेरिया था. बट आप पानी कैसे पीते हैं? बॉटल से पीते हैं. लाइफ कैसे हो गई? सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, टेंशन हो गई है. सो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, डिप्रेशन, न्यूरो, रेस्पिरेटरी, ये बहुत बढ़ रहा है. तो इसी तरफ हम लोगों ने वी हैव एडेड 18 more new divisions. So our hands are full for next few years. आज की डेट में हमारा कंट्रीब्यूशन क्रॉनिक साइड से आता है 34%. और हम सोचते हैं कि इसी तरफ फोकस किया जाए. और इंडस्ट्री के कंपैरिजन में हमारा जो ग्रोथ है क्रॉनिक के ऊपर वो 1.4 times है. वी हैव ऑलवेज बीन 40% ahead of the industry's growth क्रॉनिक साइड के लिए. अगर फार्मा की साइड एज ए होल कंपनी के देखें तो आप कंपनी जो है ग्रो करती है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के कंपैरिजन में 1.3 times. So going forward our focus is and would be on chronic side and consumer side के अंदर. कंज्यूमर में हमारे मैन फर्स्ट कॉन्डम आता है विच इज़ इंडियाज नंबर 1 ब्रांड. 30% मार्केट शेयर है उसके पास. प्रैगा न्यूज़ प्रेगनेंसी कार्ड वो भी इंडिया का नंबर 1 है. उसके पास 80% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है. अनवांटेड 72 एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उसके पास भी 60% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है. चाहे वो एक्ने स्टार है, चाहे वो हेल्थ ओके है, चाहे वो गैसो फास्ट है. वी सी दैट वी कैन डू वंडर्स इन दिस. और जब भी आप किसी कंपनी को आप देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि ऑन फ्रंट साइड इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग. सो प्रिस्क्रिप्शन वाइज मैनकाइंड इज नंबर 1 in India. But revenue wise, we are 4th largest company. What it reflects कि हम जो भी बेचते हैं एक अफोर्डेबल प्राइस पे बेचते हैं. To come to this level in 27 years, और जब सोचिए इस बात को, हमारे पास सिर्फ 50 लाख रुपए थे बस. So whatever
valuation people are talking about, it's all has been done by adding value in the people of mankind, systems of mankind, products of mankind. उससे ही ये आगे बढ़ी है. आपको जब बड़ी स्ट्रांग मार्केटिंग होती है तो उसके लिए आपको बहुत अमेजिंग फैक्ट्रीज चाहिए जो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बना के दें. सो 75% प्रोडक्ट्स हमारी अपनी फैक्ट्रीज में बनती हैं. सो दैट गिव्स अस एडवांटेज. क्वालिटी का हाईएस्ट स्टैंडर्ड रख सकते हैं हम लोग. और इसके अलावा क्या है कि जो आप थर्ड पार्टी को कॉस्ट देते हैं वो बचा लेते हैं, सो दैट डिस्पाइट ऑफ गिविंग अफोर्डेबल प्राइजेस यू एंड अप मेकिंग प्रॉफिट्स. बट जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में होते हो तो आपको कंटिन्यूसली अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर डिफ्रेंसिएशन लाना होता है. एंड फॉर दैट वी नीड गुड R&D. तो अगर आप इसको एज ए होल देखें, स्ट्रांग मार्केटिंग बैक्ड अप बाय फैंटास्टिक फैक्ट्रीज, वी हैव 25 प्लांट्स. और उसके बाद जो डे टू डे, मंथ टू मंथ, क्वार्टर टू क्वार्टर आपको डिफ्रेंसिएशन लाना होता है, उसके लिए R&D होती है. लोग सोचते हैं कि R&D सिर्फ का काम यही होता है कि 5-7 साल के अंदर कोई एक प्रोडक्ट बन के आ जाए नया सा. इट डज नॉट हैपन लाइक दिस. After 9 years of working, our scientists in mankind could crack one very difficult to make product, and we became the second company after Abbott, dydrogesterone, जो डाइड्रोबोन के नाम से हमारा आता है, और वो 200 करोड़ प्लस का हो गया है. बट इट टुक अस 9 years. जब आपका इस तरह से करते हैं तो लोगों के जो क्रिटिक्स होते हैं कि नहीं नहीं आपके पास R&D है तो क्या करा आपने. सो वी हैव सम प्रूफ ऑफ पुडिंग एज वेल कि हमने कुछ करा है इसके अंदर. देन on the last side we have our consumer side which really creates buzz in the market. जो इन्फ्लुएंस करती है, जो एक बस क्रिएट करती है. सो ऑल इन ऑल you'll find that mankind is a very very unique kind of a proposition, जिसके पास कंज्यूमर भी है, प्रोडक्ट्स. और उसमें फिर आप एक बात देखिए कि हमारी फिलॉसफी क्या रही है, लीडरशिप की रही है. हमेशा किसी भी प्रोडक्ट्स को देखिए, नंबर 1 की तरफ जाते हैं हमेशा. काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स प्रिस्क्रिप्शन में देखिए तो नंबर 1 जाते हैं. एंड लुक एट द जर्नी ऑफ मैनकाइंड. 1995 में जब हमने स्टार्ट किया था, आवर टर्नओवर वाज ओनली 5 करोड़. सेकेंड ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ की हुई थी. और उसके बाद हमारी सोच क्या थी, वॉट एवर वी आर डूइंग इन 1 year कैन वी डू इन 1 month. On this philosophy mankind has always worked. 1995 5 crore, 2000 50 crore, 2007 approximately it was 500 crore rupees, 2018 5000 crore rupees. This is the way we have basically grown. That's the philosophy of mankind. Leadership, subscriptions, this is how we basically grow. And ambitions क्या हैं, क्या करना चाहते हैं आने वाले टाइम में. क्रॉनिक के ऊपर बहुत काम करना चाहते हैं, कंज्यूमर के ऊपर बहुत काम करना चाहते हैं. And some kind of a dream is there, ambition is there, that can we make it a institution, can we make it an organization which can be admired by mankindians first and later on by the people. As for my understanding, the company uh, doesn't have any debt also. It's a cash-rich company. So, how are you going to manage your capacities or expenses that obviously it's going to occur in the near future? We come from a very lower middle class family, और मेरा भाई हमेशा वही हमारे जो चेयरमैन है वही पार्ट डालता रहता है. So from day one we are very averse to take any kind of a debt. डरते हैं बहुत ज़्यादा, नहीं लिया कभी भी आज तक. वी हैव ऑलवेज बीन ए कैश रिच कंपनी. एवरी ईयर वी जनरेट कैश, तो कैश की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. अब वी हैव ऑलवेज बीन ए कॉन्ट्रेरियन कंपनी. अब कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में बात बोलता हूँ. जितना भी हमारे पास कैश आता है उससे ही हमारा एक्सपेंशन हो जाता है, हमारा कैपेक्स का काम हो जाता है, ओपेक्स का काम हो जाता है. इवन आफ्टर दैट वी बेसिकली एंड अप सेविंग मनी. बिकॉज क्वेश्चन क्या आता है कि पैसे से ज़्यादा आपका दिमाग चलना चाहिए. It's not the money which can really bring you growth, can make your company grow faster. मनी चाहिए, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन मनी के साथ साथ ये माइंडसेट होना चाहिए, यू शुड हैव क्रिएटिव आइडियाज. एंड आवर बिलीफ इज स्केर्सिटी जब भी होती है वो ज़्यादा क्रिएटिव बनाती है. अब ये OFS है हमारा. क्यों OFS है? कभी पैसे की जरूरत नहीं है हमारे को, क्या करेंगे लेके. एंड व्हेन यू टेक मनी, जब हमने पैसा लिया तो हमने किसी प्राइवेट इक्विटी फंड को दिया, देन वी आर रिस्पॉन्सिबल, दैट वी टेक एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो डिफरेंट टाइम्स पर जरूरत थी हमारे को. आई डोंट थिंक वी नीड दैट.
बल्कि हमारा फोकस क्या रहता है कि जितना हमारे पास पैसा जनरेट करते हैं गोइंग फॉरवर्ड, इफ विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी राइट प्राइस पर, क्रॉनिक साइड में, इंडिया की साइड में, कंज्यूमर्स की साइड में, we are open for M&A, and because we are recently we have done one in license deal with Novartis. We were very successful in that. Naptas, uh, जो इस साल का सेकंड बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्चेस में से रहा होगा, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है। तो हमें लगता है कि हमें आने वाले टाइम में होपफुली इस तरफ भी हम सोच रहे हैं कुछ हो जाए। दैट्स अ पॉइंट। Sure. Okay. So now I want to understand a little bit more about your financials. Could you please give us a brief about how the company has performed in FY 2022, and also uh, is it possible to share the growth prospects for the near future? फ्यूचर के बारे में बोल नहीं सकता बिकॉज आवर हैंड्स आर टाइड द रेगुलेटरी बिकॉज सर्टेन rules are there, but historically our EBITDA has always been in the range of 25-26%. हमेशा यही हमारा EBITDA रहा है। जो 9 months हैं जिसके हमने डिक्लेयर करा हुआ है उसमें देयर इज सम काइंड ऑफ कंप्रेशन इज देयर, और उसका रीजंस भी हैं कंप्रेशन के, बिकॉज यू ऑल अंडरस्टैंड कि उस टाइम पर चाइना के विंटर ओलंपिक्स थे, यूक्रेन और रशिया के कन्फ्लिक्ट्स थे, डॉलर रुपी प्राइस बढ़ गया था, तो थोड़ा सा हमारे को उसका इम्पैक्ट पड़ा हमारे ग्रॉस मार्जिन के ऊपर, चूंकि एपीआई का प्राइस बढ़ गया। दिस इज वन ऑफ द रीजन। प्लस एज आई मैंशनड यू, we added many thousands people, one, and we acquired one company, Panacea Biotech। वो मार्च में ही हमारे पास आई थी। हमने उसके लोग भी लिए थे और प्रोडक्ट्स भी लिए थे, तो थोड़ा सा कंप्रेशन उस तरफ से आता है। और उसके अलावा वन ऑफ है। वन ऑफ क्या आता है कि जो हमने इसको अमलगमेट किया, दोनों को मिलाया कंपनियों को, मैनकाइंड और पेनिशिया को, तो उसका कुछ परसेंटेज है। दैट्स वन रीज़न। दैट मेक्स अराउंड 4% का बनता है कि 2-2.5% का आता है हमारा एपीआई की वजह से, और 1-1.25% का आता है हमारा जो एम्प्लॉयज़ जो बढ़ गए उसकी वजह से, प्लस 0.5%, 0.6% का जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है इस वजह से कि वन ऑफ की वजह से। दिस इज़ हाउ दिस ईयर, बट गोइंग फॉरवर्ड हमने एमआरपी बढ़ा दिए, प्राइस बढ़ा दी, बिकॉज वी गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइजेस, प्लस एपीआई के जो प्राइजेस हैं होपफुली स्टेबल कर गए हैं। कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, वी आर होपफुल अच्छा ही करेंगे। Great. Okay, so we wish you all the very best for this upcoming IPO, and it was great talking to you. And thank you so much for joining in. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.